Here we are taking the basic concept, important terms and the formula related to the unit number 1. First one is the physics is a science of measurement that deals with the measurement. Next is there are 7 basic or fundamental units which can't be derived by multiplying or dividing by other units. So they are 7 in number. According to internationalized system of units, these are meter for length, kilogram for the mass, second for the time, ampere for the current, Kelvin for the temperature, and candela is the unit for the measurement of luminous intensity. In addition, two other supplementary units are there, radian for the angle and steradian is for the solid angle. The next is the order of magnitude of a number is the power of 10 closest to that number. This is how we'll put the power of 10. The next important thing is about the significant figures. In that, the first rule is all non-zero digits are significant. For example, it is 123.47. So these all are this number is containing all non-zero digits. So its significant figure is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 is the number of the significant figures. All zeros between the non-zero digits are significant. For example, the number is 309.002. So it is containing 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 significant figures. The reason behind this is because of this rule that is lying between the non-zero digits. The third rule, if there is no decimal point, zeros to the right of the rightmost non-zero digits are significant if and only if they come from measurement. I'll give an example for this. If suppose a number is 27500, then how many significant figures it is containing? Only 3. These zeros that according to this rule that are lying at the rightmost won't be considered. The 3 is the significant figure for this. Now, if the number is 27500 point, then it will be containing 1, 2, 3, 4, 5, 5 significant figures. If the number is 400 meter, a measurement is being given. So 1, 2, 3, 3 will be the significant figures. So this point or the meter that is coming from measurement, then these zeros will be counted for the significant figures. Otherwise, you will it is not containing any measurement. A simple number 27500 is there. So these zeros won't be counted for the significant figure. It will be only 275. Now, if I take 27500 meter, then 1, 2, 3, 4, 5. It will be containing 5 significant figures because a measurement of meter is being added here. So if a unit is being there, then these zeros will be counted, otherwise they won't be counted. The next point is all zeros to the left of a decimal point but to the right of a non-zero digits are significant. For example, 23400 point. So this decimal before these two zeros, they will be counted significant according to this rule. So it is having 3, 4, 5, 5 significant figures. The next is all zeros to the left of the leftmost non-zero digits are not significant. For example, it is 0.03040. So these zeros won't be counted according to this rule. So it is containing 1, 2, 3, 4, only 4 significant figures. The next is all zeros to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit are significant. It means this thing, that if the number is 0.02340 or it is 4.400. Now, according to it, the
zeros to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit are significant. It means this 0 is at the right and it is following the non-zero digit. So this will be significant. It is containing 4 significant figures. Again, for 0.00, it is containing 4 significant figures. So this is according to the rule. The next is the number of significant figures. They don't depend upon the choice of the unit. They are independent of that, and that is going to remain the same whatever the way of measuring the unit, whichever the system of unit we have selected. In the fifth point, in addition or subtraction, the number of decimal places which are significant in the result is same as the smallest number of significant decimal places in any number used in the sum or difference. I would like to make this point clear with an example. Suppose we need to add three numbers, say 3.7, 3.07 and 0.311. If you look at these numbers, we are clear about after decimal about the accuracy up to first number 0.7, but don't know after that. Now in the second it is 0.07. So up to two places we are knowing about the accuracy, and in this case up to 3. If we add them 3.7, 3.07, it is 0.311. We are not clear about this point, about this third digit here, about the third one. So we are having it as 7.0. Now if you look at the terms that we have added and the answer that we got after addition, so this is having only first term, only one term accuracy. It is having two terms accuracy after decimal. It is having 3. And in the addition, the result, we are having the accuracy that is equivalent to the least accurate term. So in we got a conclusion. In sum, the accuracy in result is limited to the accuracy of least accurate term. ये हमारे पास क्लियर है. हमारी सबसे लीस्ट एक्यूरेट टर्म, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक की एक्यूरेसी इसमें मालूम थी, इसमें हमें सेकंड ऑर्डर तक मालूम थी, थर्ड ऑर्डर तक मालूम थी. जब हमने इन तीनों को ऐड किया और जब हमारे पास सम आया, तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस के बाद हम उसके लिए श्योर हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जब हम सम करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी जो होती है रिजल्ट की, वो कहाँ तक होती है, जहाँ तक हमारे पास सबसे लीस्ट एक्यूरेट टर्म है वही हमारे रिजल्ट में आएगा, और यही इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है. नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमें दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 4.48 और 4.41. इनको सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.07. नाउ 0.07 is having significant figure. कितनी है इसकी, 1. It is limited to 1 significant figure. अगर हम देखते हैं तो हमने जिन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 थी और इसकी सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 है. लेकिन जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ बच रही है 1. इसका मीनिंग क्या है कि जब हम डिफरेंस करते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी है that decreases, that got destroyed on getting them difference. So this is an important conclusion. When two nearly equal quantities are subtracted, accuracy destroys.
एक्यूरेसी जो है हमारी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in the product or the quotient is same as the smallest number of significant figures in any of the factor. For example, हमें 3.8 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 0.125 से, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आया 0.475। अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, ऑन राउंडिंग इट ऑफ वी हैव 0.48, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ रिजल्ट का 2, और हमने जिनको मल्टीप्लाई किया था उसमें स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसकी थी 3.8 की 2, क्योंकि 0.125 की हमारे पास 3 है। तो हमारा जो रिजल्ट आया है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो उतनी ही होगी जितनी हमारे पास फैक्टर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें उन फैक्टर्स में से जिनका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। और ऐसा ही अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो सेम रूल अप्लाई होता है। जब हमने डिवाइड किया और हमारा जो आंसर आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा, उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी जो सबसे छोटे वाली वैल्यू होगी जिनको हमने डिवाइड किया है फैक्टर्स को, उनकी सिग्निफिकेंट फिगर जिसकी छोटी होगी उसी का ही आंसर जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में आएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर. Whatever is the exact standard value, and if experiment is carried out and it have been found that it is not coming as such, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और हमारी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो उस डिफरेंट वैल्यू को, मेजर्ड वैल्यू की अनसर्टेनिटी जो है वो एरर होती है। एरर कितने टाइप्स की हैं, यहाँ पर हम 4 टाइप्स की एरर देख रहे हैं। कांस्टेंट एरर, हम लोग रीडिंग में देख रहे हैं कि बार बार नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ज़रूरी नहीं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने और भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और रिपीटेडली हमारे पास एक पैटर्न एरर का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो कैलिब्रेशन हो सकती है स्केल की वो गलत हो और वो एरर बार बार रिपीट होकर आ रही है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है हमारा सिस्टमेटिक एरर, इसका जो रीज़न है वो हमें मालूम होता है और इसलिए हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। इट मे बी एन इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका स्केल का स्टार्टिंग का पॉइंट ब्रोकन है, तो वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट की एरर है और इसको हम रिमूव कर सकते हैं। पर्सनल एरर हो सकती है। पर्सनल एरर में भी अगर हम लोग थोड़ा सा उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कैसे कर रहा है, एक जो एक्सपेरिमेंट को रीड आउट कर रहा है, तो उसने सामने से ना लेकर किसी और साइड से खड़े होकर अपनी रीडिंग को लिया है, तो वहाँ पर वो गलती कर रहा है और इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स, सपोज जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आउटर एरिया में, इन्वायरमेंट में, वहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, तो उस टाइम पे हमारा एरर आ सकता है। इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज में जैसे कि हम लोगों ने कैलोरीमेट्री की मेजरमेंट करनी है और वहाँ पे लॉस ऑफ रेडिएशन हो रहे हैं, तो हमें एक वैल्यू जो है वो करेक्टेड वैल्यू कहती हैं उसको, उस करेक्टेड वैल्यू को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग जो हमारी एरर है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है ग्रॉस एरर्स। ग्रॉस एरर्स जो हैं ये सभी एरर्स को एक तरह से कंसीडर कर लिया, इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर नॉट टेकिंग केयर ऑफ प्रिकॉशन, तो इनकी वजह से जो एरर आएगी वो हमारे पास ग्रॉस एरर है। नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर के रीजंस हमें नहीं मालूम होते और यहाँ पर कोई सेट पैटर्न भी नहीं है कि हर बार वही रिपीटेड आती जा रही है एरर, और ये क्योंकि इसका नेचर ऐसा है तो ये अकर करती है रैंडमली। सो दीज आर द पॉसिबल टाइप ऑफ एरर्स दैट कैन अकर. Absolute error, it is the magnitude of the difference between the value of the quantity and the individual measured value. इसका मतलब ये है कि सपोज करें हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें A1, A2, A3 से अप टू AN, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज आई, तो हमें एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना है, हम इन्हीं का ही सभी वैल्यूज का मीन ले लेते हैं
और उसको हम ट्रू वैल्यू लेकर चलते हैं या करेक्ट वैल्यू लेकर चलते हैं। तो हमारे पास ये जो मीन वैल्यू है दैट इज टेकन एज अ ट्रू और द करेक्ट वैल्यू। और इस मीन वैल्यू में से जब हम इंडिविजुअल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी मीन वैल्यू आई, सपोज ए मीन लिख लिया हमने, ये हमारी आ गई मीन वैल्यू, या इसी को ही हम ट्रू या करेक्ट वैल्यू बोल रहे हैं। इसमें से अगर हम A1 को माइनस करते हैं तो उसको हम जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ये हमारी एब्सोल्यूट एरर आ गई A1 में। ऐसे ही हम सभी के लिए डेल्टा A2, डेल्टा A3 सभी वैल्यूज को निकाल लेंगे, और ये हमारे पास क्या आएंगी, एब्सोल्यूट एरर। अगर हम इन एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल लें तो वो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाती है, डेल्टा A1 delta A2 up to delta AN divided by N, that is mean absolute error. नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, और एंड द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, ए मीन, जो हम लोगों ने यहाँ पर ए मीन निकाला था, उस मीन को हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे और मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो इन दोनों की जब हम रेशो लेंगे तो हमारे पास रिलेटिव एरर आती है। अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो परसेंटेज रिलेटिव एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपिगेशन ऑफ एरर। अगर हम इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट द टू क्वांटिटीज, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटीज। इसका मीनिंग ये है कि जब हम लोग एरर्स को कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, उन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का, तो वहां पर हमारे पास जो है प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स आती है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल चलेगा जिसमें कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो है फाइनल रिजल्ट में वो किसके इक्वल होगी, maximum absolute error in the quantities that are being to be added or subtracted. To explain this point, I will take an example of two resistances. Say R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm, and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm. These are connected in series, and for equivalent resistance we need to add them. So our value will be R1 plus R2 will be equal to 300 plus minus 7 ohm. So this is how we will be doing. We will be adding the errors. Plus minus 3 ohm is the error and plus minus 4 ohm is the error in R2. So that are added. In case if there are two lengths, say L1 is equal to 11.5 plus minus 0.1 centimeter and L2 is 10.2 plus minus 0.1 centimeter, and the difference is to be taken out of two of them, then it will be 1.3 plus minus. Though we are taking subtraction, we are subtracting two of these things, but errors will be added. That will be 0.2 centimeter. So this will be the answer for this. So this is how what it is being mentioned in addition or subtraction. The result for the error is the sum of the absolute error given in the quantities. Next is when we multiply or divide two quantities, the maximum percentage error in the final result is equal to the sum of the maximum percentage error. According to it, let any physical quantity, say P, is equal to A into B upon C D, and the percentage error in A is say 3%, in B it is 1%, in C it is 2%, and in D it is again 1%. So how much will be the percentage error total? So that will be these two are multiplied, these two is AB is divided by CD, but in the result the percentage errors will be added up 3 plus 1 plus 2 plus 1. So it will be 4, 6 and 7. 7%
is the total error in this physical quantity. Whether they are getting multiplied or divided, the percentage error in the final result is equal to the sum of the percentage errors. The next is to convert a physical quantity from one system of unit to another with the help of dimension analysis. The following equation can be used. Here we are, this n2 and n1 are the numerical values, and one numerical value in the one system of unit can be found out by applying this relation. N1 is the numerical value in another, and by using the dimensions in these two, we can find out this value. We can check the accuracy of dimensions by making use of principle of homogeneity of dimension. For example, we are having a relation s is equal to ut plus half at square as an equation of motion. So here s is the distance, and the dimension on this side is, on the left hand side, is of length. M will be 0 and t is 0 here. So when we are going to find out over here, again, because this the dimension on both the sides should be equal, तो यहाँ पे जो हम dimensions निकालेंगे वो भी हमारे पास, जब हम find out कर रहे हैं तो distance के ही आते हैं. तो अगर दोनों तरफ से हमारे dimension same है तो हम कहते हैं कि ये equation जो है हमारी correct है. Dimensionally we can check out the accuracy like this.